Hello students. So in this lecture we are going to discuss analog to digital converter and digital to analog converter. This is just an introductory lecture. So in this lecture we are going to discuss various specification of this converter and what are the purpose of this converter as the name suggests. Analog से digital तो मतलब आप analog signal देंगे and it will give the digital output. Similarly when digital input is there, output is analog. So the device which convert this signal like this digital to analog, it is known as digital to analog converter. So broadly classified into two type. अगर इसको D2A कन्वर्टर को देखें तो एक तरीके से हम एक वेटेड रजिस्टर देखते हैं, R2 और लैडर टाइप देखते हैं. ठीक है, उसी तरीके से एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर जो है डेट विल काउंटर टाइप, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप, फ्लैश टाइप, ड्यूअल स्लोप. ठीक है. फर्दर मोर अगर हम स्टार्टिंग में हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर अगर देखते हैं तो ये जो है रिजोल्यूशन, ये अलग अलग पैरामीटर है कन्वर्टर का. तो सबसे पहले इफ वी वांट टू डिफाइन रिजोल्यूशन, व्हाट इज रिजोल्यूशन. सो रिजोल्यूशन क्या होता है? इट इज अ रिजोल्यूशन ऑफ एनी D2A कन्वर्टर इज चेंज इन एनालॉग वोल्टेज कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 LSB बिट. ठीक है, क्योंकि इनपुट जो होगा वो क्या होगा, इनपुट हमारा डिजिटल है, तो डिजिटल के एक LSB बिट से एक LSB बिट के चेंज पे कितना एनालॉग वोल्टेज चेंज हो रहा है. ठीक है, तो आउटपुट पर कितना एनालॉग वोल्टेज चेंज हो रहा है विद द चेंज इन कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 LSB बिट इंक्रीमेंट एट द इनपुट. ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले अगर 000 है और ये 0001 आ गया इनपुट में, तो कितना एनालॉग में आपका एनालॉग आउटपुट कितना चेंज होगा. सो that is defined by the resolution. So resolution is for D2A converter, resolution is VR divided 2 to n minus 1. So VR is reference voltage corresponding to logic 1. Okay, so in this way you can find the resolution. Next is analog output voltage. So analog output voltage आप कैसे निकालेंगे? कोई भी अगर आपको इनपुट दिया है, कोई भी अगर डिजिटल इनपुट है तो कैसे निकालेंगे आप? It will be multiplication of resolution into decimal equivalent to binary data. ठीक है, उससे आप एनालॉग आउटपुट और बाइनरी डाटा, उससे आपका एनालॉग आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आपको 4 बिट D2A कन्वर्टर दिया हो, ठीक है, इफ इट इज गिवन दैट देयर इज अ 4 बिट D2A कन्वर्टर हैज रेफरेंस वोल्टेज आपका 10 वोल्ट है और बाइनरी डाटा जो है आपका 1001 है, जो कि इनपुट में आपने अप्लाई किया है, देन व्हाट विल द एनालॉग आउटपुट. तो आप सबसे पहले क्या करें, रिजोल्यूशन निकालेंगे. 4 बिट का डाटा है तो रिजोल्यूशन विल 2 to the power 4 minus 1 divided by this 10 divided by 2 to the power 10 4 minus 1. So accordingly you will get this resolution and you will multiply it with decimal equivalent. इसका decimal equivalent कितना होगा? This will be equivalent to 9. Okay, so 9 into this resolution you will get the output, analog output voltage. Okay, so next is this maximum output voltage. It is a VFS. It is also known as maximum output voltage. So how you will define it? You will be VR divided 2 to the minus n minus 1 into 2 to the power n minus 1. So you will get the maximum output voltage. This will be cut it down and you will get the reference voltage is equal to this maximum output voltage. Previously we have get this resolution. Okay, now if you want to find out the percentage of resolution, फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, हमारा सिंपल सा होता है स्टेप साइज डिवाइडेड बाय फुल स्केल आउटपुट. ओके, इन लेमन लैंग्वेज इट विल बी स्टेप साइज डिवाइडेड फुल स्केल आउटपुट. if you want to redefine this percentage of resolution in the above this resolution or full scale voltage, then it will be resolution divided by full scale voltage into 100. Okay, when you simplify this resolution divided by full voltage then full scale output, then it will be 1 by 2 to n minus 1 into 100. This is a percentage of resolution. Okay, so next specification of this D2A converter is error or accuracy. So how you will define the error or accuracy? तो error और accuracy क्या है? maximum error acceptable
जो होता है A to D और D to A is 1 LSB bit, okay, which is also equal to its resolution. So error और accuracy जो acceptable है both in D to A or A to D converter is 1 LSB bit, okay, which is also equivalent to this resolution. In this case, the special case will be for this for the resolution part. We have get the resolution as VR reference word to the divided by 2 to the power and divided by 2 to the power n minus 1. So there is a special case of resolution for R2 ladder type, which is a D2A converter. This is a R2 is a D2A converter. This second type. This is the resolution of VR divided by 2 to the n. Only this R2 ladder type has different resolution than all other its counterpart. Okay. On the other hand, if you see the resolution of A to D converter, then it will be resolution will be V range divided by 2 to the power n minus 1. This range will be, because it is a analog input will be there, so V range will be V max minus V min, okay, divided by 2 to n minus 1. This is a resolution. You will define this resolution by this. Percentage of resolution will be 1 by 2 to n minus 1 into 100. Okay, error I have discussed previously that it is the minimum maximum error acceptable will be 1 LSB bit, which is also equal to the resolution. So 1 LSB equals to resolution, and the dynamic range will be 6n plus 1.8 dB, which is, if you approximate it, then it will be depend on the number of bit 6n. Okay, so that's all for the specific A to D or D to A converter. In the next lecture, we are going to discuss the different type of digital to analog converter. Thank you very much.